Hello everyone. In this video, we are going to discuss structure of balance of payments, which will cover current account, capital account, and overall balance of payments. Before starting the video, if you're new to our channel, then subscribe it और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे. So let's begin. Here we will understand the entry system of balance of payments. In the earlier video, we have understood the meaning, definition, and need and importance of balance of payments. Balance of payments refers to recording of all economic transactions of a given country with the rest of the world. Balance of payment means एक country की rest of the world के साथ जो भी economic transactions हैं उनको record करना. So here we will understand how the transactions are recorded or entered in the statement of balance of payments. These are recorded according to double entry system. A statement of balance of payments has two sides. One is credit side, another is debit side. In credit side, all inflow of money are recorded, and in debit side, all outflow of money are recorded. So if a transaction earns foreign currency for the nation, it is a credit and is recorded as a plus item. तो अगर एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कि एक नेशन के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करती है मींस मनी का इनफ्लो होता है देन इट विल बी अ क्रेडिट आइटम एंड इफ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इट इज अ डेबिट एंड इज रिकॉर्डेड एज अ नेगेटिव आइटम. और अगर एक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करती है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो मींस फॉरेन करेंसी खर्च होती है तो वह डेबिट आइटम होगी. Here we will understand what are the components of balance of payments. Basically, there are three components of balance of payments: current account, capital account, and overall balance of payments. So let's understand what is current account, capital account, and what is overall balance of payments. Current account includes merchandise that is visible and invisible items. Merchandise or visible means the goods. Visible items means the visible items that are goods having physical existence which we can touch and see. So it includes import of goods and export of goods. And invisible items includes the services like compensation of employees. Compensation of employees can be in the form of salaries, remuneration or wages we pay to them. And the shipping services, medical services, insurance services, banking services, warehousing services, etc. So these are the services which are included into invisible items. Second item that is included into invisible item is income. Income like rent, interest and profits. वह इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो कि एक नेशन को जो उसने इन्वेस्टमेंट की है दूसरे नेशन में उस इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट और प्रॉफिट रिसीव होता है दैट विल बी द income here. And transfer means the unilateral transfers like the gifts, grants and donations etc. जो भी गिफ्ट्स ग्रांट्स या डोनेशंस दूसरे नेशन को दी जाती है एक नेशन के द्वारा that are included into transfer. So these are the items that are included into current account balance. Second one is capital account. Account include two items, equity and debt. And what equity includes? Equity includes foreign direct investment and foreign institutional investment. What is foreign direct investment? Foreign direct investment is an investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि एक नेशन की बिजनेस यूनिट के द्वारा या एक नेशन के द्वारा दूसरे नेशन में कंट्रोलिंग ओनरशिप गेन की जाती है. लाइक एक नेशन की किसी भी कंपनी के द्वारा दूसरे नेशन में किसी कंपनी में अगर मनी इन्वेस्ट की जाती है उसकी ओनरशिप एक्वायर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. And what is FII? Foreign institutional investment. These are large companies that invest in countries other than where their headquarter is located. वह लार्ज कंपनीज जो कि दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं उन कंट्रीज में जहां पर उनका हेडक्वार्टर नहीं है. लाइक एक इंडियन कंपनी है इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है बट
that company is investing in USA. That will be foreign institutional investment. And debt includes NRI deposits, short-term debt, and ECBs, means external commercial borrowings. So these are the items included into capital account. What is overall balance of payments? The overall balance of payment is finally reflected in the official reserve account of RBI. So let's understand the current account in detail. Balance of payments on current account includes the value of import and export of both visible, means the goods, and invisible items, means services. Current account transactions are called account of actual transactions of import and export of goods and services. And these transactions have a direct effect on income, output, and employment of a country's economy. करंट अकाउंट बैलेंस में विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है. विजिबल आइटम्स मींस गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और इनविजिबल आइटम मींस सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. So balance of payments on current account is equal to visible exports plus invisible exports minus visible imports plus invisible imports. Means विजिबल और इनविजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट में से हम माइनस करेंगे विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट, देन वी विल गेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट. So the balance of payment on current account may be both balanced or unbalanced. In case of balanced position of balance of payment, receipts and payments on account of export and import are equal. And in case of unbalanced balance of payment, it can be a deficit or in surplus. This equilibrium of the balance of payment on current account is usually balanced with the help of transactions in capital account. करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है. बैलेंस्ड पोजीशन कब होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की? जब रिसीट्स और पेमेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इक्वल होंगी, मींस ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, देन इट विल बी बैलेंस्ड. और अनबैलेंस्ड सिचुएशन कब होगी? जब डेफिसिट या सरप्लस होगा, मींस या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो वो होगा अनबैलेंस्ड पोजीशन या फिर डिसइक्विलिब्रियम. और उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की हेल्प से उसको बैलेंस किया जा सकता है. So what is capital account? A capital account refers to financial transactions. It mainly includes foreign investment and external loans, all kinds of short-term and long-term international capital reserves, capital transfers, foreign debt, foreign investment payments and receipts on account of interest and grants, etc. are also included into capital account. All transactions under capital account are concerned mainly with the financial transfers between our country and अदर कंट्री. कैपिटल अकाउंट मींस वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल लोन्स इंक्लूड किए जाते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस एक कंपनी के रेजिडेंट्स या कंपनीज के द्वारा दूसरी कंट्रीज में की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. या फिर दूसरी कंट्री से एक कंट्री ने लोन लिया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की कैपिटल ट्रांसफर्स को इंक्लूड किया जाता है. Next is overall balance of payments. Total of a country's balance of payment on current account and capital account is known as overall balance of payment, which is reflected in official reserve account of RBI. हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को स्टडी किया. तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का टोटल है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स plus export of services plus capital receipts minus import of goods plus import of services plus capital payments. Means current account balance plus capital account balance. That will be the overall balance of payments. So let's understand balance of payment in more detail. As we have already studied that the transactions in balance of payment are recorded on the basis of double entry system. So in credit side, all receipts are recorded, and in debit side, all the payments are recorded. So let's understand
how the transactions are recorded in it. Like the first is current account balance. When we will record all receipts on credit side and payments on debit side. So in case of current account balance, what will be the receipts? Receipts will be export of goods. That will be recorded on credit side, and import of goods will be the payment that that will come in debit side. Export of services credited, import of services debited. Interest, profit and dividend received, that will be credited, and interest, profit and dividends paid, that will come in debit side. Unilateral receipts will come in receipts in the credit side, and unilateral payments in debit side. This was the current account balance. Now, in the capital account balance, what type of transactions are recorded in credit and debit side? Investment from abroad means abroad से फॉरेन कंट्री से किसी कंपनी ने या रेजिडेंट ने हमारी कंट्री में एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड. अब्रोड से इन्वेस्टमेंट दैट विल कम इन क्रेडिट साइड. एंड इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड मीन्स फॉरेन नेशन में इन्वेस्टमेंट की गई है एक नेशन के द्वारा, दैट विल बी डेबिटेड. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अगर उधार लिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए, दैट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज मनी का इनफ्लो हुआ है, क्रेडिट साइड आएगा. शॉर्ट टर्म लैंडिंग, उधार दिया गया है, मनी का आउटफ्लो है, दैट विल कम इन डेबिट साइड. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बोरोइंग ली गई है, उधार लिया गया है, दैट इज इनफ्लो, दैट विल कम इन क्रेडिट. एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए उधार दिया गया है, मनी का आउटफ्लो है, तो वह डेबिट साइड आएगा. Errors and omission, statistical discrepancy and errors and omission, statistical discrepancy. अगर यहाँ पर कोई भी बैलेंस मैच नहीं करता, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उस लाइक कोई भी एंट्री रह गई है, छूट गई है, तो उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, दैट विल कम हियर. इट कैन कम इन डेबिट साइड एंड इट कैन कम ऑल्सो कम इन क्रेडिट साइड. And what is adjustment? Adjustment, change in reserve. That can be in plus, and change in reserve can be in minus also. That can come also in debit side. Like if the imports are more than export, then there will be minus. Balance change in reserve will be minus, and if the exports are more than imports means receipts are more than payments, then change in reserve will be in plus. That will be in credit side. This is how the balance of and the transactions in balance of payments are recorded. So I hope you must have understood this video lecture very well. In the next video, we will understand the disequilibrium in balance of payments. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.